when we talk about matrices or matrix, it is nothing but a linear equation if it is written as a 2x minus y is equal to 3. So when you represent an equation, you can convert them in the form of a matrix. I'll write this in this form and write it as equal to 9 and 3. That means a row multiply with the column. तो यहाँ से जो आता है ये 1 into x plus 1 into y, and from second row and first this column it is 2x minus y, which is equal to 9 and 3. So I can say x plus y is equal to 9, and I can also say 2x minus y is equal to 3. So my dear, this is a way through which you can write a linear equation in the terms of matrices. Matrices are used whenever there are many variables. So for example, today if Ola cab or Uber cab, if it wants to find out where should I put my drivers so that they would get the maximum lead, or they would travel the minimum distance to reach to their lead. So it is dependent not on one variable, it is dependent on a lot of things. Which day of the weekday is it? Fine. Second is which place, what timing, how is the traffic on the road? There are a lot of factors which are going to decide it. So whenever we are talking about the multiple variables, we are talking about the matrices. Fine. So any complicated equation can be converted to a matrix and then we can solve it. Okay. If I talk about this, I can say this matrix is named as A. This is x is equal to y. So I'll say x is equal to A inverse into y. This is what you are knowing. So if someone wanted to find out the values of x and y, I will say it is A inverse into y. What is A inverse? We will discuss about that. Before that, I would like to tell you that there is a zero matrix as well. I hope it is clear. यहाँ तक एक होता है zero matrix. Zero matrix is that matrix where every term is coming out to be zero. So if it is a 3 by 3, अच्छा matrix को represent करने के लिए row into column होता है. So there are 3 rows, 2 column. Will be represented as 3 by 2. 3 rows, 3 column, I'll represent it by 3 by 3. This is how we can represent a matrix. So कोई बोले 2 by 3 है, what does that mean? So that means 2 rows and 3 columns. So there will be 2 rows and there will be 3 columns coming. These are known as a rows. These are columns. These are columns. Okay. Is it fine till this point here? Okay. Next is what is identity matrix. Identity means unit. Whenever a matrix is written as a 1 0 0 0 1 0 0 0 1, I'll say this is nothing but identity matrix. क्या है ये? Identity matrix. ठीक है. Then there is just a second. So if I talk about identity matrix is, I hope you know this thing, that it is only the diagonal value which are coming out to be 1 and the rest of the terms are equal to 0. ठीक है ना? ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. I'll multiply this row with this column. ये प्रोसेस होता है, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता है. फर्स्ट टर्म 1 से मल्टीप्लाई करेगा, second 0 is multiplying with y, third 0 is multiplying with z. Then it is 0 into x plus 1 into y plus 0 into z plus 0 into x plus 0 into y plus 1 into z. If I look at this, this comes out to be what? X, y, z. Do you understand what I'm saying? So it is in identity matrix, it is only the diagonal terms which are coming out to be 1, the rest of the value will be equal to 0. Okay. Now the next part is symmetric matrix. Symmetric matrix is if it is 1, 2, 4, 3, 7,
6, 2, 4, 6. So this will be also 2, 4, 6. Whatever is, look at this diagonal, whatever is coming above this, the same thing will be coming at the bottom. So this is known as a symmetric matrix. क्या कहेंगे इसे? Symmetric matrix. Is it fine? Clear? सॉल्व करेंगे और इससे आंसर आ जाएगा. ठीक है? Is it fine? Clear? Anyone? ठीक है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जो सिमेट्रिक होगा, ऊपर के जो 3 टर्म्स है दे विल बी सेम हियर. और ये भी कह सकते हैं ट्रांसपोज. जानते हैं आप ट्रांसपोज क्या होता है? व्हेन यू चेंज अ रो टू अ कॉलम, व्हेन यू चेंज अ रो टू अ कॉलम, और वाइस वर्सा, कॉलम चेंजेस टू अ रो. तो फर्स्ट रो इज 1 2 4, आई विल से 1 2 4, सेकंड इज 2 7 6, थर्ड इज 4 6 9. I will say the matrix hasn't changed. That is known as symmetric matrix when transpose का मतलब होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर ले. When transpose of A is equal to A, I will say this is a symmetric matrix. Is it fine? Now the next one is diagonal matrix. Diagonal matrix is same as a identity matrix. The only thing is that it is not coming out to be only 0 0. Only diagonal elements are available there, so it is a diagonal matrix. Is that fine? हाँ, मतलब 1 1 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ होगा. आप ये भी कह सकते हो कि यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है. Then there is the upper triangular matrix. I will say this is 1 1 1. This is A B C, and the rest of the terms are coming out to be 0. Diagonal में जरूर नहीं है 1 1 1 हो, ये 2 3 भी हो सकता है. तो they are diagonal items. Above than that there are values which are non-zero, but below this all values should be 0. तो इसे कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. वैसे ही लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है. दिस इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल से नीचे वाली वैल्यू तो नॉन जीरो, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू 0 है. जानवी, इज इट क्लियर टू यू एज वेल? ओके ओके. ठीक है. Say there is a matrix. This is a matrix A. What is minor of? देखो, this item is known as a A11, first row, first column. This is first row, second column. This is second row, first column. This is second row, second column. तो minor of A11 क्या हो जाएगा? First row, first column नहीं लोगे आप, 6 लोगे. What is minor of A12? First row, second column का, you will say 4. What is minor of second row, first column? Look, this is second row, this is first column. तो बचेगा सिर्फ 3. Second row, second column, what is that? 4. ठीक है. Is it fine? Clear? तो माइनर का मतलब होता है कि जैसे आपने माइनर ऑफ दिस टर्म लेना है, इस वाले टर्म का माइनर क्या होगा? तो आप ये रो नहीं लोगे, ये कॉलम नहीं लोगे, जो आइटम बचा है वो दैट इज योर आंसर. हाँ, नहीं 2 होगा, सॉरी. सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम यू विल राइट 2. ठीक है. इज इट फाइन? क्लियर एवरीवन? सो हाँ, मतलब जो जैसे A11 का मैंने, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेंगे. सुनो, मैं बात तो सुनो. फर्स्ट रो कोई आइटम नहीं आएगा, फर्स्ट कॉलम का आइटम नहीं आएगा, जो बचा होगा वो आएगा. क्लियर? अच्छा, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल.
मान लो this is a matrix. What is minor of A1? First row, first column. I'll say it is 4, 5, 2, 1. ये बचा. इसको आप सॉल्व करेंगे सर. लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4. Minus left hand side lower value with multiplying with right hand side upper value 2 into 5. So my dear, this is 4 minus 10. What is it? Minus 6. Can you tell me what is minor of A12? निकालना जरा. I'll not take first row, second column. क्या मैं कहूँ ये first rows 1 3 5 1? हाँ ना. तो this is 1 into 1 minus 3 into 5. क्या आपको समझ में आ रहा है? So this is 1 minus 15 is equal to क्या? Minus 14. What about the minor of A1? 3. First row, third column I will not take. I'll say it is 1 4 3 2. Let's solve it. 1 into 2 minus 3 into 4. Yes. Find out the minor of A21. निकालो आप लोग भी निकालो अब. Now you also try it. So second row and first column will not be taken. So I'm left with 2 7 2 1. I'll write 2 1s are 2 minus 2 7s are 14. So 2 minus 14 is minus 12. Kindly find out the other values as well. You try first. Now I want to tell you one more thing, that is cofactor. सुना है? Of A11. इधर सुनिएगा जरा. This is minus 1 की पावर 1 plus 1. ये देखो ये सबस्क्रिप्ट में जो लिखा है. Into minor of A11. You know it is minus 1 की पावर 2 and A11 का क्या minor था? Minus 6. So this comes out to be minus 6. Cofactor of A11 is minus 6. क्या होता है cofactor of A1? Minus 6. What about cofactor of A12? That is minus 1 की power 1 plus 2 and it is a minor of A12. What is minor of A12? Minus 14. So this becomes क्या? Plus 14. क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके निकालो, सबका cofactor निकालो. Find the cofactor of every number. Okay, so what do you get if I talk about this? Should I say ये हो गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि मैं इकट्ठा एक ही बार में आपको करवा सकूं. नहीं वो सब चला जाएगा ना, ये भी चला जाएगा. क्लियर ऑल में ये भी चला जाएगा. तो व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ A11? तो हमने बताया ये 4 1 4. ठीक है. A11 का कोफैक्टर, तो दिस इज 4 1 4 minus 10, that is minus 6. Cofactor of A12, minus sign, first row, second column. It is 1 minus 15, that is plus 40. Cofactor of A13, first row, third column. तो this is plus sign. क्यों? क्योंकि minus 1 की पावर 1 plus 3 4 होता है. 2 1s are 2 minus 12, that is minus 10. A21 second row first column. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन. दिस इज 2 minus 14 plus 12. A22 हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. दिस इज 2 1s are 2 minus 21 minus 90. A23 क्या हो जाएगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम. इट इज माइनस साइन 4 minus 6. कोफैक्टर ऑफ 3 1 कितना हो जाएगा? प्लस साइन आएगा, याद है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. तो दिस इज 10 minus 28, that is minus 80. A32 क्या हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ A32 is third row second column. I'll say minus sign. That comes out to be 10 minus 7 is minus 3. A33 का कोफैक्टर क्या होगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम. It is 4 2s are 8 minus 2 is 6. What do you get? You get 6, 14 minus 10, 12 minus 19 2 minus 18 minus 3 plus 6.
ठीक है, एग्रीड? दिस इज कोफैक्टर ऑफ ए. देन देयर इज अ वन थिंग व्हिच इज नोन एज अ एडजॉइंट ऑफ ए. मैंने पढ़ाया है आपको. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? जो कोफैक्टर ऑफ ए होता है उसका ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज. तो मैं क्या करूंगा? 6 14 minus 10 12 minus 19 2 minus 18 minus 3 and 6. माइनस नहीं है, 6 है. ठीक है, इज दैट फाइन? क्लियर? दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. यार थर्ड रो थर्ड कॉलम में 5 2 10 minus 28. थर्ड रो सॉरी थर्ड कॉलम 4 2 8 minus 2 is plus 6 ही तो होगा. A1 first row first column 4 minus 10 is minus 6. अच्छा minus 6 हो गया. ठीक है, is it fine? This is known as adjoint of A. Is it clear? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. अब what is A inverse? A inverse is known as the adjoint of A upon determinant of A. Upon determinant of A. So for example, for this number I want to find out A inverse. Adjoint of A आ गया. Determinant of A निकालने के बारे में बात करते हैं. इधर सुनिएगा. ठीक है, अब ये मैंने adjoint तक करा दिया, आपको determinant मैं अभी बताता हूँ. ठीक है, तो यहां से कुछ पहले नया कुछ करते हैं, फिर A inverse पे बाद में आते हैं. So let's come to the first one. The minor and cofactor of each of the element of the first column of the following matrices and hence evaluate the determinant in each case. जब हम A determinant की बात करते हैं तो जैसे हम कहते हैं A11, आप या तो ये एक रो सॉल्व करते हो या एक कॉलम सॉल्व करते हो. You don't solve both. तो आई एम सॉल्विंग इट बाय रो. आई से इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसमें से पहला A11 मतलब 5 लिखूंगा एंड देन आई विल मल्टीप्लाई बाय क्या? किससे? कोफैक्टर ऑफ A11 इज कोफैक्टर ऑफ. फिर माइनस लेंगे सेकेंड वाला. क्यों माइनस होगा? क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड. That this value will be minus 1 to the power of 1 plus 1. 5 is the value which is written here. First row, first column will not be coming cofactor of A11. Then it is plus 20 to the power of first row, second column. I'll write it. So first row and second column में से ये उड़ गया. क्या बचा? How much is left? 0. Cofactor of first row, second column. So what do you get? It is minus 5 into minus 1. This is 20 into 0. So that is 5 plus 0 is kitna? 5. Do you understand? This is known as a determinant of A. क्या कहते हैं इसे? Determinant of A. आप कहेंगे सर अगर मैं इसे कॉलम से सॉल्व करूंगा तब भी वही आंसर आएगा. बिल्कुल सही. कॉलम से सॉल्व करोगे, कॉलम से सुनो, तो पहला वैल्यू आया 5. माइनस 1 की पावर 5 इंटू कोफैक्टर. ये माइनस 1 था ना भाई? अच्छा ये दिस इज प्लस. तो ये माइनस 5, दिस विल बी माइनस. ठीक है, इज दैट फाइन? अरे यार लिखा है वो ऐसे, ऐसे ही मारा था मैंने कि इट इज माइनस 5. ठीक है, नाउ यू सॉल्व इट बाय कॉलम वाइज. आई एम इरेजिंग इट सो दैट यू कैन सी इट. 5 करा है देखो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो विल नॉट कम. व्हाट विल कम? माइनस 1. फिर प्लस माइनस 1 की पावर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इंटू 0. इंटू क्या है ये? 0. ठीक है, बचा गया सामने 20. आपका आंसर कितना आया? माइनस 5 प्लस 0 इज कितना? माइनस 5. देखो मैच कर रहा है आंसर. आपको क्या सर जरूरी है पहला रो पहला कॉलम लेना? क्या मैं सेकंड कॉलम नहीं ले सकता? ले सकता हूं. आई एम टेकिंग सेकंड कॉलम. सुनो जरा,
सेकंड कॉलम में पहले 20 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इट इज -20 आया और सामने 0 है, प्लस -1 to the power of 2 plus 2, and it is 5 which is left there. So this is 0 plus answer is 5. Is that fine? हाँ ना, पहले 20 था, फिर 0 था, फिर -1 की पावर 2 plus 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इंटू 5, दैट कम्स आउट टू बी 5. ठीक है. कुछ लोग बोलेंगे डिटरमिनेंट में हाउ कम वन इज कमिंग आउट टू बी 5 एंड सेकंड इज कमिंग आउट टू बी -5? कैन वी चेंज इट? इट इज लाइक अ मॉडुलस. कैन वी चेंज इट और आर दे सेम? देखो, जब आपने -1 की पावर 2 plus 2 करा, ये तो उसके लिए था, कोफैक्टर के लिए. इंटू -1 भी तो होगा, तो ये +5 नहीं होना चाहिए था. कितना होना चाहिए था ये? -5. दोबारा बता देता हूँ इसका कैसे करा. मैंने नंबर लिया -1 इंटू ये -1 मतलब ये वाला नंबर है, -1 की पावर 2 plus 2, एंड देन व्हाट आई डू, क्योंकि हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, हम माइनर नहीं ले रहे, इंटू 5. सो दैट कम्स आउट टू बी -5. इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? कौन सा वाला? ये वाला? सर हमने कहा हमने सेकंड कॉलम ले रहे हैं और सेकंड रो ले रहे हैं. ठीक है साहब, ये सेकंड कॉलम है, मैंने पहले 20 लिया, सामने 0 था, 20 इंटू 0 इंटू एनीथिंग इज 0. देन आई टेक -1, -1 आई विल नॉट टेक दीज टू वैल्यू, 5 इज लेफ्ट. तो -1 इंटू 5 इज क्या? -1. -20 क्यों लिया? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. पहले 20 ले लिया आपने, फिर -1 की पार यार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, एंड देन सामने वाला वैल्यू 0 होगा, क्योंकि हमने माइनर नहीं ले रहे. मैं बार बार कह रहा हूँ, कोफैक्टर में -1 की पार भी लिया जाएगा जो उसकी पोजीशन है. सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कमिंग आउट टू बी 0 हियर. हालांकि आएगा 0 ही, लेकिन व्हाई माइनस. ठीक है. ओके, वेरी नाइस. ग्लास पानी पिलाना. ठीक है. वुड यू लाइक टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज नाउ? एक नंबर और करके दिखाऊं आपको? एक में रुको जरा, एक एक कर लेता हूं, कोई बात नहीं. आई एम सॉल्विंग थर्ड वन. तो मैंने पहले क्या करा, मैंने पहले 1 लिया, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, तो यहां जो बचा है वो -1 2 5 2. फिर दूसरा क्या लूंगा मैं, ये सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस. ये नहीं लूंगा मैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 4 3 2 2. फिर प्लस मैं 2 लूंगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बचा क्या? 4 3 -1 5. तो ये कितना हो जाएगा? -2 -10 -12 प्लस 3. 8 -6 इज कितना? +2. 2 into 4 5 is 20 plus 3 is 23. So this is -12 plus 3 2 is 6 plus 46. 52 minus 12 कितना आता है? 40. What is the answer? 40. Is it fine? Clear? तो solve them. इस वाले को solve करो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम लेके, मतलब सेकेंड रो से solve करो इसको, इस क्वेश्चन. और देखो, आर यू गेटिंग द सेम आंसर और इज इट डिफरेंट?
Here I go. I am sure all of you must have done this. Now I want you to try out all these 6 questions. Can you? Yes. So just try out these 6 questions. Nigri, question. Let's see here. Let me do question number 6 here. Okay. So what is cofactor of A? Cofactor of A is minus 1 की power 1 plus 1. Do you know why I'm doing 1 plus 1? Because this is first row and first column. Okay. And then what is left here is BFFC. What do you get? BC minus F square. What is cofactor of B? That is A22. मतलब second row, second column. Minus 1 to the power of 2 plus 2. आप ये रो नहीं लोगे, ये column नहीं लोगे, बचा क्या? AFGC. Just check it out at AC minus FG. Is that fine? Clear? This is how you can do it. Pragya ji, is it clear to you? Okay, now can you find out the determinant of this? Should I give you one example? आपने x लिया, first row, first column will not come. 5x plus 1, this is 5x square plus x. This is determinant. Second, if you don't want to go by this one, ठीक है ना? I want to take second row, first column. तो ये कितना हो जाएगा? minus 7 into x, that changes to plus 7x. और फिर क्या आ जाएगा? plus 5x plus 1 into कितना? x. So that gives you 5x square plus x plus 7x. ठीक है. सॉरी, ये था, ये पहला वाला रो का तो हो गया था. प्लस एक और चीज आएगा ना, ये माइनस 7 का प्लस 7 आएगा इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 8x. You can check it out here. 5x square plus 8x. Do you agree with it? I'll take the whole row. मैम पहले वाला होगा x आएगा, 5x plus 1 आएगा, फिर माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस will become plus into x. So if you open it, it is 5x square plus 8x. If I talk about second row, I'll say x into minus 7. Minus sign is already there outside. 5x plus 1 into x. So it is 7x plus 5x square plus x. Or my dear, I'll say it is 5x square plus 8x. Both of them are equal. Is it fine? Clear now? Yes, sir. Clear? ठीक है. Would you like to do question number 2nd, 3rd and 4th? तो cofactor नहीं निकालना, determinant निकालना है. Do it. So let's take I would like to take this one. It will be cos square theta, Nivesh, plus sin square theta. Can I say it is 1? First I take first row, first column, cos theta is left, cos into cos is cos square. Minus minus will become plus sin square theta. Let's do it. It is cos 15 degree into cos 75 degree. Minus sin 75 degree into sin 15 degree. What do you know it? Cos A, cos B minus sin A, sin B. Can I say it is cos A plus B? Am I right? So it is cos of 90 degree, which is equal to kya? 0. Let's do this. Can I say it is A square minus iota square into B square? Minus of minus C square plus iota square D square. A square plus B square minus of minus D square minus C square. Can I say it is A square plus B square plus C square plus Yatharth Babu? What is your answer? Same. मतलब हमने सही किया है इसका. Yes sir. Here I go. You remember I told you iota square is minus, so this is changing to minus D square. This plus iota square D square is minus D square. ठीक है sir? Here also minus iota square is plus. Minus iota square था ना, तो minus into minus 1 is plus 1 ना. ठीक है? Can I go to the next?
देखो भैया ये ए है, ये स्क्वायर है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। डिटर्मिनेंट है, ऑफ कोर्स दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स डिटर्मिनेंट। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये मॉडुलस टाइप का डंडा खींचा हुआ है, तो दिस इज नोन एज अ डिटर्मिनेंट।
Here, determinant of AB is known as a determinant of A into determinant of B. You should be aware of it. So when I'm talking about the square of it, say that A is equal to 2, 3, 7, 13, 17, 5, 15, 20, 12. I want to find out the determinant of this 2, 17 into 12 minus 5 into 20. Then it is minus 3, 13 into 12 minus 15 into 5 plus 7. Alternately chalta rehta na? So this is 13 into 20 minus 15 into 17. Is it fine? Clear? Yes, no? So 12 sevens are 84, 204 minus 100 ka double minus thrice of 156 minus 75 plus 7 times of 260 okay. So what is it? It is 208 minus 81 243. Am I right? 208 plus 35 minus 243, my dear, it comes out to be 0. So what is 0 into 0? Great. So answer comes out to be 0. Okay? Yes. Vansh. Let's take this one. Trigonometry, we already covered it. So I'll say it is sine 10 degree, cos 80 degree plus cos 10 degree into sine 80 degree. याद है sin A cos B, cos A sin B is sin A plus B, which is equal to 1. Am I right? अच्छा, I can also write this एक और तरीका है sin 10 degree. I can say cos 80 is again sin 10. Cos 10 degree, that is also cos 10 degree. So it is sine square 10 degree plus cos square 10 degree. Your answer is 1. Do it. Find out the determinant of it. Fast, Negi ji. Here I go. 2. नहीं sir, 1 second नहीं. तो काफी टाइम हो गया. -3. This 7 plus -6 -5 28 plus 3. So this is 9 2s are 18 -3 -5. This is what? 31. 15 minus 140. Is this the answer that you are getting? Yes. Very nice. ठीक है? कोई doubt? कुछ पूछना है पूछ लीजिए. Let's do this now. Should I start? Nivesh? करो चलो ठीक है. I'm waiting. This. So what I'll do is it is 0. This is 0 plus sine square b beta. Am I right? Negi ji, I'll not take this row, this column, this minus will become इसलिए ऐसा लिखा. ठीक है. Moreover, why should I write it when I already know 0 into anything is what? 0. बस आपकी खुशी के लिए मैंने लिख दिया, नहीं तो मैं लिखना नहीं चाहता था. Minus sine alpha. I'll not take this column, this row. So this is 0 into anything is 0 minus sine beta into cos alpha. Am I right? So this is also gone.
Then I'll be taking the third value. What is the third value? It is minus cos alpha. This is sine alpha, sine beta minus 0. So this is 0. So I'll say this is sine alpha, sine beta, cos alpha minus sine alpha, sine beta, cos alpha. कहाँ तक नहीं आया? आप कुछ कह रहे थे. देखो यार, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये माइनस होगा साहब. आंसर विल बी 0. एनीवन हु गॉट द आंसर 0? ओके, 2 3 4, वेरी नाइस. Try to get the answer here now. Solve first and third. The first thing that I need to realize is, could you see here please? Rather than doing a calculation with a larger number, I could see this one. Can I do something so that value will become 0? So what I'm saying here is, I will say column second will be column second minus thrice of column first. Column second will be thrice of column first. माइनस करोगे तो ये आ जाएगा. और उससे पहले एक और काम करना है. कॉलम थर्ड इज इक्वल टू कॉलम सेकेंड प्लस ट्वाइस ऑफ कॉलम फर्स्ट, मतलब C3 माइनस दिस. समझ में आया? क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? पहले मैं ये करूंगा C3 का, तो देखो C3 का क्या आ जाएगा? 1 2 31 तो आएगा. दिस इज 0. What about this? 6 plus 4 is 10, 0. This is 31 twice of C1, 62. अरे बोलो भाई. And this is C1 plus 11, 73. So 38 minus 73. ठीक है ना? So this is 35. So I'll say this is minus 35. Let's talk about second. 3 minus 3 is 0. This is 0. This is 93. 11 minus 93 is minus 82. Do you understand this? So I'm getting these values as a 0. आंसर देख रहे हो? आंसर मैचिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है. तो I'll go by first row. तो first row में 1 आएगा सिर्फ, and I will be saying 0 0 82 minus 35 minus 82 minus 35. What is the answer of this? 0. आपका आंसर कितना आ रहा था? I'll simplify it. This is a better way. Nivesh, what we are doing is we are trying to change some values to the 0, my dear. So I could see the second column. If I triple the first column and then I separate it from second column, I am going to get the second column here. Second thing is third column is second column plus twice of first column को इससे separate कर दो तो 0 आ जाता है. तो when 4 of the values are coming out to be 0, आपने इस रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करा है, तो 0 minus 0, बाकी तो सब 0 into anything is 0, 0 into anything is 0. I believe it is clear. किसी भी रो किसी भी कॉलम के साथ आप ऐसा काम कर सकते हैं. C3 is C3 minus C2 plus twice of C1. C3 जो कॉलम थर्ड है, जैसे 5 है, तो उसमें से 3 तो सेपरेट करना है, लेकिन जो पहला कॉलम है उसका डबल करके सेपरेट करना है, तभी तो 0 आएगा भाई. हाँ, C3 नहीं है भाई, वो तो C2 करना है. C2 कॉलम सेकंड है, कॉलम सेकंड माइनस थ्राइस ऑफ कॉलम फर्स्ट. Okay. Do you understand that this is column 1? Do you know this is column 1, this is column 2, this is column 3? I know 1 into 3 is 3, 3 दोनों same आ जाएंगे. 2 into 3 is 6. Only this is a larger value coming. I can say 5 is 3 plus double of it. तो 1 का double is 2 plus 3 is 5 हो गया. 6 plus 4 is 10 हो गया. Are you getting it? So I'm getting the same value. So what I do here is I'll be saying that column second is equal to column second minus thrice of column first, and column third is equal to column third minus column second minus twice of column first. Do you understand, sir? So 1 2 31 does not change. Column second minus thrice of this, 3 minus 3 is 0, 6 minus 6 is 0,
11 minus 93. This comes out to be 5 minus, इधर देखो, 3 plus 2 is 5. And this is 10 minus 6 minus 4. This is 38 minus 11 minus 62. This is what I'm going to get. I'll say it is 1, 2, 31. This is, my dear, 0, 0 minus 82. This is 0, 0. This is minus 35. Solve them now. Is it fine, Claire? Pakka, dekh lo. Everyone, I believe it is clear to you. So you can do all these columns के हिसाब से, rows के हिसाब से भी कर सकते हैं आप. जरूरी नहीं आप column के हिसाब से करें. ठीक है? Should I tell you about the rows? ठीक है? Erase कर दूं इसको, इजाजत हो तो. Can I say row second tends to row second minus twice of row first? Whenever two rows are same or two columns are same, whenever two rows or two columns are same, the determinant is always 0. So what I get from here is, it is already 1, 3, 5. So this row second is 2 minus 2, 6 minus 6, 10 minus 10, which comes out to be 0. Any row which is coming out to be 0, I will say the answer is 0. So 1, 3, 5, 0, 0, 0, 31, 11 and 38. I will say determinant of this is 0. Do you agree with it? बिल्कुल सही सर, अब वो करवा रहा हूँ. If I look at the second column, 2 is column common, तो I'll take out 2 common. इधर सुनो सुनो, तो 2 into 2 into 2 नहीं करना, बस एक ही 2 common आएगा. This is 1, 3, 5. This is 31, 11 and 38. Whenever two rows are coming out to be same, determinant has to be equal to 0. Whenever two rows or two columns are equal, determinant has to be 0. This is what you need to remember. Arnav, is that clear? ठीक है. I'm sure you tried this one as well, third one. Should I say it is symmetric one? Can I use the word symmetric here? If you transpose that, you will be going to get the same answer. It is a bc minus f square minus h. It is hc minus gf plus g hf minus bg. So it is abc minus af square minus h square c plus g, sorry, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, fgh plus fgh minus bg square. Can I say fgh? Okay, so it is abc plus twice of fgh minus af square minus bg square minus ch square. कोई बताएगा? This formula I have already discussed earlier. You remember I told you whenever there is a general equation in coordinate is if the determinant of this comes out to be ahg, hbf, gfc. कुछ याद आया? If this is equal to this 0, this represents what? Pair of straight line. अरे भैया जब area of something is 0 मतलब खुला हुआ है ना, तो that represents a pair of straight line. याद है कुछ कराया था ऐसा? So this is the same equation that they want you to prove. I believe it is clear to all of you. Okay. Sure. Solve question number 6 and 8.